Education Academy. Today we are going to discuss about parts of speech. In the parts of speech, which topic? Preposition. Preposition means noun, pronoun से पहले आने वाला शब्द, यानी अंग्रेजी में इसका क्या करेंगे? डेफिनेशन देखेंगे. डू यू नो अबाउट इट? डू यू नो डेफिनेशन? Yes. Okay, come. I am defining it. See, listen. Preposition is a word which used with a noun or pronoun to show its relationship with something else. With something else. Remind it. Very nice definition it is. What it is telling? Preposition शब्द योगी अव्यय ऐसा शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम के संबंध किसी और वस्तु के साथ दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है. समझ में आया? तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी और वस्तु के साथ, किसी स्थिति के साथ दर्शाने का शब्द को हम क्या कहते हैं? शब्द योगी अव्यय. तो अंग्रेजी में कहीं एग्जाम्पल्स हम लेंगे तो ऑन, अंडर, इन और फ्रॉम, ऐसे जो शब्द हम वाक्य में उपयोग करते हैं, which these words we used daily in our sentences, on, under, in, from, these are the prepositions. Then take an example in sentence. Okay, water is in the glass. Water is in the glass. This is a sentence. This is a sentence. Water is in the glass. In this sentence, which is preposition? We have to find out according to our definition. Okay? What is definition? Preposition is a word which used with a noun or pronoun to show its relationship with something else. With something else. That is a definition. According to this definition, in this sentence, water is in the glass. Water, where is water? In the glass. In the glass. The glass, it is a noun. Then it's placed before the noun to show relation between the water and glass. To show relation between the water and glass. Where is water? In the glass. In, you have to underline it. That is a preposition. समझ में आया होगा? तो क्या? पानी ग्लास में है. पानी ग्लास में है. तो पानी कहाँ है? ग्लास. ग्लास और ग्लास में पानी है. पानी ग्लास में है. दोनों का अर्थ एक ही है, मगर पानी का और ग्लास का जो रिलेशन, जो संबंध दर्शाता है, वो ही शब्द क्या है? शब्द योगी अव्यय. प्रीपोजिशन. पानी कहाँ है? ग्लास में. In, that is the preposition. Again one example I am taking and telling you. See, I am on the road. I am on the road. Road, I am standing on the road. I am standing on the road. Road, I. दोनों का relation. Where I am standing? That's telling on. On, it is a preposition. It shows the relation between I and road. That on it is a preposition. See, mango fell from the tree. The mango fell from the tree. It means mango is there, noun is there, it falls. Mango falls. This is not giving the meaning properly sentence. That is why mango fell from the tree.
From which place it came? From tree. It shows the relation tree and mango. In between tree and mango, that is the preposition. From it is the preposition, my dear friends. Do you understanding? I think you are understanding better it is. Okay. Then take the we are going to explain it in मराठी. ओके. केवल प्रयोगी अव्यय म्हणजे काय मित्रांनो बघा. तर केवल शब्द योगी अव्यय याच्याबद्दल प्रिपोजिशन बद्दल आपण चर्चा करत होतो. शब्दयोगी अव्यय. तर शब्दयोगी अव्यय हा असा शब्द की जो शब्द नाम आणि सर्वनाम याचे संबंध इतर सर्व काही वस्तूंशी दर्शवितो. इतर सर्व काही वस्तूंशी संबंध दर्शविणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणू शकतो? शब्दयोगी अव्यय असं म्हणू शकतो. ही व्याख्या झाली शब्दयोगी अव्ययाची. तर एक एक्झाम्पल घेऊया. तर काय घेऊया? आंबा झाडातून पडला. कुठून? झाडापासून पडला. तर कुठून पडला? झाडापासून. आंबा आणि याचं झाड याच्या दोघांच्या मधलं जे काय संबंध दर्शवितो पासून पडला. ओके. दॅट इज तो आहे शब्दयोगी अव्यय. त्याचप्रमाणे बॉल इज ऑन द टेबल. बॉल इज ऑन द टेबल. बॉल कुठे आहे? बॉल आणि टेबल याच्या मधलं जो संबंध दर्शवितो ऑन, तो काय आहे? बॉल कुठे आहे? टेबल वर आहे. बॉल कुठे आहे? टेबल वर. बॉल आणि टेबल याच्यातील संबंध दर्शविणाऱ्या शब्दाला आपण काय म्हणतोय? शब्दयोगी अव्यय. मित्रांनो कळला असेल तुम्हाला शब्दयोगी अव्यय म्हणजे काय. तर मी हिंदीमध्ये सुद्धा एक उदाहरण याचं सांगतो. तर कॅट इज अंडर द टेबल. कॅट इज अंडर द टेबल म्हणजे कैट टेबल के नीचे है. कैट और टेबल दोनों का संबंध जो दर्शाता है तो कहाँ है? तो अंडर, नीचे. नीचे जो शब्द है वो क्या है? हम शब्दयोगी अव्यय बोल सकते हैं. तो तीनों भाषा में हम क्या किया है? डेफिनेशन और क्या एग्जाम्पल्स के साथ हम इसके बारे में प्रीपोजिशन के बारे में क्या किया है समझ के देने के लिए हम ट्राई किया है. आपको फ्रेंड्स समझ में आया होगा. ओके, बाय बाय, थैंक यू.